Hello everyone, welcome back to another video of Core Java series. So this video is continuation video of previous video जो तरीके हमें पढ़ले variable data types कौन सब data types रहिला right ये सब जिन हम पढ़ले previous video रे जो माने previous video देखी नांती make sure कि previous video देखो जो द्वारा कि तुम्हें relate कर पारो ये video because this is the second part of variable and data types. तो ये video रे हम कौन सीखिबा ये video में step by step practically ଯେତିକି ବି ଆମେ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡେଟା ଟାଇପ୍ସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେତିକି ବି ଆମର ରହିଲା ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଡେଟା ଟାଇପ୍ସ ତାହା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦେନ୍ ଅନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ वी विल लर्न कि कौन कौन सब स्कोप रही आउ कौन कौन सब लेवल रही गोटे वेरिएबल क्रिएट करार देन थर्ड रूल्स आम जाना वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन रूल राइट कौन सब जावार स्टैंडर्ड अच्छी रूल्स अच्छी फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स एंड फोर्थ विल आल्सो लर्न कि गोटे क्लास ना केमी क्रिएट करा जाए राइट कीवर्ड कौन आइडेंटिफायर कौन ये सब जिनस ये वीडियो शिखा तो बाय एंड ऑफ दिस video what you will understand for variable and data types you will be fully ready for the interview means for this topic especially variable and data types topic ପାଇଁ तो completely interview ପାଇଁ prepare ହେଇଯିବ because ଆମେ each and every part of variable and data types ଆମେ এই দুইটা part of video ରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଆଗରୁ ତ ଆମେ already ଶିଖିଛନ୍ତି theoretically ଏବେ ଆମେ practically କେମିତି देखा जाए राइट केमती आम यूज करा जावा प्रोग्राम तो से सब जिन वीडियो आम शिखा तो बाय एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी फुल्ली रेडी फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चन सो ध्यान रे जहाँ भी देखुच राइट तक फुल्ली प्रैक्टिस कर 2 थर 3 थर 10 थर भी प्रैक्टिस कर जिते पर्यटन तुम बुझा पड़नी जिते पर्यटन तुम जापार राइट तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा आ प्रैक्टिकली देखा आम केमी यूज करवा सब प्रकार प्रिमिटिव डेटा टाइप ना सो आज वीडियो कौन सब शिखा आज वीडियो जमी कहली मु प्रिमिटिव डेटा टाइप राइट ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करवा शिखा देन टाइप्स कौन कौन सब टाइप्स अच्छी राइट वेरिएबल रो देन स्कोप स्कोप कौन अच्छी ता शिखा आई विल एक्सप्लेन यू स्कोप कौन टाइप्स केते प्रकार अच्छी राइट देन रूल्स ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स एंड क्लास नेमिंग स्टैंडर्ड these three things will learn because तुम तीनटा जिनस जो शिख राइट यू विल बी फुल्ली रेडी फॉर द इंटरव्यू दे विल आस्क स्कोप राइट रूल्स ये सब जिनस मन रख दिस इज द बेसिक जिते भी कौ इंटरव्यूअर गोटे फ्रेशर को इंटरव्यू नियंती तो यही सब बेसिक जिनस ही पचारती जो थी कि देख एडवांस लेवल तो समस्त पढ़े राइट बट बेसिक अंडरस्टांडिंग जार रोकोसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फ्यूचर जब रिक्वायरमेंट आसे से इजिली बुझीपारे because they know the basic of any of the programming language जदि तुम जावार बेसिक जानछ same applies to python same applies to c++ same applies to kotlin right तो तुम बेसिक क्लियर रहा दरकार तो बेसिक सब बेले फोकस कर एडवांस लेवल तो समस्त शिखिजे राइट तो ये तीन जिनस ये वीडियो शिखा बाय एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो एवरीथिंग फॉर दिस टॉपिक एंड इंटरव्यू रे तुम क्लियर फुल्ली क्लियरली तुम एक्सप्लेन कर पार तो प्रैक्टिकल कोडिंग करवा आम प्रीवियस वीडियो आम पढ़ी सब कि थियोरी जिते भी थियोरी अच्छी सब पढ़ी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आउ रेफरेंस डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप जी डेटा टाइप अच्छी सब पढ़ी आम आज ये वीडियो रे कौन करवा आम प्रैक्टिकल करवा तो प्रैक्टिकल कले कौन करवा आम स्टूडेंट क्लास क्रिएट करवा जोटा कि स्टूडेंट डिटेल क्लास राइट स्टूडेंट डिटेल क्लास क्रिएट करवा तो स्टूडेंट डिटेल क्लास जो क्रिएट कर आम कौन कौन सब स्पेशली स्टोर करवा स्टूडेंट एज स्टोर करवा देन ईयर स्टोर करवा को ईयर रे से जॉइन होती स्टूडेंट आईडी राइट इट कैन बी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ईयर और जॉइनिंग ईयर any year you want to store then you can go and store student id phone number marks right fees किंवा price anything grade placement status ये सब जिनस आम स्टोर करवा तो प्रैक्टिकल करवा एंड यही सब डेटा स्टोर करने कौन सब वेरिएबल नवा राइट हाउ वी विल क्रिएट आवर नेमिंग स्टैंडर्ड
ସବୁ କିଛି ଏଠି ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ନୋଟ୍ସରେ ତୁମ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି। ଏ ନୋଟ୍ସ ବି ସେୟାର କରାହେବ, ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବ। ସବୁ ଯେତିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟ୍ସ ରହିବ, ତ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ସହିତ ନୋଟ୍ସ ବି ଗୋ ଥ୍ରୁ କରିବ, ଯାହା ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୋ କରୁଛି। ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେକୁ ଆଉ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ କ୍ଲାସ୍। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଫୋଲ୍ଡର। ତୁମେ ଯଦି ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଫଲୋ କରିଛ ଦେନ୍ এই ଫୋଲ୍ଡର ବେସିକାଲି ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ଆମ କୋର୍ସ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ SRCକୁ ଯିବି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି। ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଶୋ ୟୁ ନାଉ। ଭେରିଏବଲ୍, ରାଇଟ୍, କ'ଣ ଡେଟା ଟାଇପ୍ and variable that's got a folder, right, which is nothing but java language रे ताको कहा जाए गोटे पैकेज। ताको मु देखौछि तुमको कोटी क्रिएट हेतिबो, राइट, हाउ इट विल लुक्स लाइक। देखो एठी अछि हमरो SRC भीतर गोटे फोल्डर, राइट, हेलो वर्ल्ड जावा क्लास अछि, मेन जावा क्लास अछि, देन स्टूडेंट जावा क्लास अछि। तो गोटे फोल्डर क्रिएट होछि। जेतले हम गोटे पैकेज क्रिएट करबा सेही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अंडर रे पैकेज SRC अंडर गोटे पैकेज क्रिएट करछन। पैकेज इज नथिंग बट ए फोल्डर। ताको आ भीतर मु गोटे जावा क्लास क्रिएट कर, दैट इज नथिंग बट स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स करबी, देन मेन क्लास। और क्लास ना कौन रहा, स्टूडेंट डिटेल्स, राइट। क्लास ना तुम जो आगर वीडियो फॉलो कर क्लास ना सब कैपिटल लेटर रे स्टार्ट हुए। आम पढ़ा रूल सेक्शन रे सब डिटेल्स आम डिस्कस करवा। देन आम रहा मेन मेथड। मेन मेथड रे आम जहाँ भी बेसिकली प्रोग्राम स्टार्ट हुए मेन मेथड रो। तो मेन मेथड रे आम जहाँ भी प्रिंट करवा चाहिए तो इन शॉर्ट जब लिखा SOUT देन एंटर क्लिक कर, तुम पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट तुमको मिल जाए। इंस्टेड तुम कौन कर निजे टाइप कर भाई, मन रहा system.out.println। तुमको दिन यह भी पढ़ेबी कि सिस्टम कौन, आउट कौन, println कौन, प्रिंट कौन, printf कौन, बहुत सारा आर ओवरलोडेड मेथड अच्छी। आम सब जिनस ओवरलोडेड मेथड अच्छी, ओवरराइड मेथड अच्छी, राइट, सब जिनस अच्छी आम शिखा। ता भी जानवा निहात दरकार, राइट। जहाँ ईच एंड एवरी वर्ड, पब्लिक कौन, क्लास कौन, राइट, दिस इज द क्लास नेम, तो स्टैटिक कौन, वॉइड कौन, ईच एंड एवरी डिटेल तुम जहाँ भी लिखुच गोटे प्रोग्राम रे सबू किछि A to Z आम शिखा। तो भीतर आम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते, करेक्ट, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते। तो हेलो वर्ल्ड को जदि आम रन करवा, हेलो वर्ल्ड को रन करा, जस्ट क्लिक करो, देन स्टूडेंट में कंसोल रे प्रिंट हो हेलो वर्ल्ड। देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गला। तो आम कौन कौन सब वेरिएबल क्रिएट करवा, और वेरिएबल सब अच्छी, राइट। लेट मी गो एंड कॉपी सो दैट तुमको बुझे भी एक्सप्लेन करा टे इजी हो। कौन कौन सब स्टोर करार अच्छी तुम जो मन थी कमेंट केमी लिखा जाए, दिस इज हाउ वी विल पुट कमेंट, राइट, पेस्ट कर दियो। ओके, कमेंट ऐड कले जद्वारा कि कंपाइलर आपको इग्नोर कर एग्जीक्यूट करनी। तो आम कौन कौन सब वेरिएबल क्रिएट करने दरकार, एज दरकार, गोटे स्टूडेंट एज स्टोर करवा, ईयर स्टोर करवा, को ईयर प्लेस होती, देन स्टूडेंट आईडी, देन फोन नंबर, देन मार्क्स, देन फीस, देन ग्रेड, राइट, देन प्लेसमेंट स्टेटस। सो लेट्स क्रिएट वन बाय वन।
आम प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज कर राइट वी विल यूज primitive data type the following details okay details of student तुम जो प्रैक्टिकल कर किसी दरकार ना राइट दिस इज जस्ट फॉर कि रेफरेंस नापी मुझे ऐड कर देछि जोद्वारा कि आम जहाँ भी नोट्स लिखी किसी भी एपट सब जोद्वारा कि तुमको रिलेट करने पर जो रेफरेंस नब से इजी हम सिंक रे रही मुझे ऐड कर देछि तो byte got a data type then age right then 20 let's say right देखो मुझे तो टाइप करते कि सजेशन आसछि से सजेशन भी केमिति आसबो मु तुमको कहबी देन कोन डेटा टाइप शॉर्ट your आसला then 2024 कौन रहा int student id so 1001 then हम कौन क्रिएट करेगा फोन नंबर करेक्ट लॉन्ग फोन नंबर and I will create something like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 okay कल जमी कही लॉन्ग पाई राइट I can write 0 L or whenever we are giving actual value then we don't need to you can ignore L or you can also add L that's not an issue but to not to make you confuse डिफॉल्ट वैल्यू जिते आम दौरान तो जानापी कि कंपाइलर जानापी एक्चुअल को प्रकार डिफॉल्ट वैल्यू मुझे जेहेतु बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग राइट ये चार्टा जगह डिफॉल्ट वैल्यू होची 0 तो टू डिफरेंशिएट इवन फ्लोट डबल 0.0 f 0.0 l राइट टू डिफरेंशिएट कि फ्लोट ना डबल डेसिमल नंबर यही चार्टा भितर एक्चुअल को डेसिमल आई मीन को नंबर वैल्यू आम डिफॉल्ट वैल्यू पास कर बिकॉज बाइट रो भी 0 शॉर्ट रो भी 0 इंट रो भी 0 लॉन्ग रो भी 0 तो से आमको डिफरेंशिएट क्रिएट करने लॉन्ग साइड देवा पड़े एल बट जेहेतु आम एक्चुअल वैल्यू दे दरकार ना ए नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टोर मार्क्स then float marks 85.5 anything you can mention okay then double fees right anything जहाँ सजेशन आस टाइप कर पढ़ा okay then car grade तुमको सजेशन न आसीपे तो तुम टाइप कर आगु शिखेबी केमी सब सजेशन दब तुमको बट सजेशन इज वेरी डेंजरस फॉर यू बिकॉज तुम प्रैक्टिकल करार अच्छी तुम टाइप करार अच्छी तुम टाइपिंग भी स्पीड हवा दरकार तुम सब जिन मन भी रहा दरकार जदि सब सजेशन आसो प्रॉब्लम हम तुम मन रखा बुझा राइट तो इट्स बेटर तुम ईच एंड एवरी कैरेक्टर तुम टाइप करवा निहाती दरकार एवरी अल्फाबेट तुम टाइप करवा निहाती दरकार कॉपी पेस्ट करनी फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एंड एवरी लाइन्स तुम टाइप कर जो कि तुमको इजी हम मन रखा बुझापी तुम कौन कले सबू जी भी डेटा हमको स्टोर करार अच्छी ऑफ ए स्टूडेंट आम सब क्रिएट कर बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैरेक्टर बूलियन right these all are primitive data type आउ आम डेटा भी स्टोर कले को क्लास स्टूडेंट डिटेल्स राइट बट नाउ व्हाट वी विल डू इज आम केम जानिबा कि मु एज 20 स्टोर करची राइट आ प्रिंट भी तो करार अच्छी जमी मु प्रिंट करतली राइट कौन प्रिंट करतली मु
हेलो वर्ल्ड प्रिंट करथिले करेक्ट तो हेलो वर्ल्ड जेमिति प्रिंट करथिले मु सेमिति प्रिंट करिया चाहूची एज तो एज प्रिंट करिया गले कोन करबी मु डायरेक्ट एज पास करबी एठी राइट लेट मी रन ट्वेंटी पास आई मीन 20 प्रिंट है करेक्ट सेम लाइक चलो सबू जति भी वेरिएबल अच्छी ता आम एक्सेस करवा मीन्स प्रिंट करवा तो प्रिंट करने सब देखिए साउट ईयर देन मु जस्ट पेस्ट कर दूसरी बट यू जस्ट तुम ईच एंड एवरी लाइन लेख मत सजेशन आस बट तुमको मे भी सजेशन आसना पारे इवन सजेशन आसले भी तुम टाइप कर ओके हम कौन कले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखिले एज ये स्टेटमेंट प्रिंटिंग स्टेटमेंट सब सेम खाली वेरिएबल ना जहाँ देती तुम एक्सेस कर प्रिंट करने राइट एक्सेस कर देन रन कर ये न आसिक भी तुम देख ऊपर भी ऑप्शन अच्छे ये क्लिक कर रन देख जहाँ भी वेरिएबल हम क्रिएट कर तार वैल्यू आम एक्सेस कले आ प्रिंट कले राइट 2024 1001 1234 567890 then 80.5 80.5 mark what student raw right this is the fee this is the grade right placed hela na nai true or false yes or no right yes पाई true ना ही पाई जोटा no that is nothing but false तो ट्रू फॉल्स रे आबे डेटा दे परबा जदि किछि देबिनी राइट कोन आसीबो जदि किछि देबिनी कोन आसीबो काई आसला एरर ए सब जिंस भी तुम प्रैक्टिस कर परबो एथि में आसला बिकॉज़ अच्छा आई विल एक्सप्लेन यू स्कोप रे पड़िया फॉल्स आसले फॉल्स ट्रू आसले ट्रू तो सब प्रिमिटिव वेरिएबल आमे केमती यूज करवा विथ असाइनिंग वैल्यू सो राइट नाउ आम गोटे जिनस चेक कले कि मुझे ट्रू इक्वल टू ट्रू रिमूव कर दूची एरर आस राइट व्हाई मु तो कहली डिफॉल्ट वैल्यू अच्छी राइट बट एरर कौन पाए आस देख माउस ओवर रख कौन आसला वेरिएबल प्लेसमेंट स्टेटस माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड माने हम वेरिएबल इनिशियलाइज करचंदी इक्वल टू पर जहाँ डेटा देइचंदी ता होची वैल्यू तो यही वेरिएबल रो वैल्यू होची 20 तो जो मु प्लेसमेंट स्टेटस लिखिली आउ गोटे जिनस भी मुझे तुमको कही कि डिफॉल्ट वैल्यू आम जो किसी दबा दे डिफॉल्ट वैल्यू अच्छे बट डिफॉल्ट वैल्यू कहीं आसुनी शो कहीं करनी एरर कहीं आस तो डिफॉल्ट वैल्यू सही जगह आसो बेसिकली मु जदि गोटे वेरिएबल क्लास लेवल रे क्रिएट करछि तो क्लास लेवल रे क्रिएट कले ही मते डिफॉल्ट वैल्यू मिलबो लेट्स से मु को मु कौन कले एटी क्रिएट कर देली राइट फॉर ए टाइम बिंग स्टैटिक कौन ए पचारनी ओके स्टैटिक कौन पचारनी राइट ना देख किसी भी एरर आसनी कौन पे मुझे जब डेटा को किसी मु पास करनी करेक्ट आई मीन असाइन करनी फॉल्स मुझे जब फॉल्स देवी एवं फॉल्स प्रिंट कर बट नाउ मुझे रिमूव करी किसी भी देवी ओके डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर कौन
false again false print करिवो मु जदि true देबी true print करिवो मु जदि किछि देबिनी false print करिवो कि मु जदि assign करबी again जहाँ भी assign value थिबो ता print करिवो बट मु किछि जदि assign करबिनी then print करिवो तार default value so that is where comes scope and variable level को लेवल रे हमें वेरिएबल क्रिएट करछन किबा केते प्रकार वेरिएबल अछि सो केते प्रकार वेरिएबल जानिया पई आमे जानिबा कि तार डिफॉल्ट वैल्यू स्कोप एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड तो फर्स्ट चलो केते प्रकार वेरिएबल फर्स्ट सिखिबा देन वन बाय वन डिस्कस करबा तो आको कहा जाए let me just comment class level variable आपको कहा जाए class level variable okay class level variable actual आपको कहा जाए actually आपको class level variable कहा जाए okay आपको कहा जाए static variable why static ए दीटा भीतर तो तुम डिफरेंस देखिबो एबे एरर को बोली जा ओके मे भी आपको कमेंट कर देबी आपको भी कमेंट कर देबी let me not comment so that तुम कंफ्यूज हो जिवो कमेंट कले ओके सो राइट नाउ ए दीटा भीतर डिफरेंस कोन ए दीटा भीतर गोटे डिफरेंस होता होचे स्टैटिक राइट ये स्टैटिक अच्छे ये स्टैटिक नहीं तो आपको कहा जाए क्लास लेवल जहाँ भी जत्ती की प्रकार वेरिएबल आमे क्लास लेवल रे राइट एटा होचे क्लास लेवल आ परे परे जहाँ भी डेटा आमे किंबा वेरिएबल क्रिएट करछन मेथड क्रिएट करछन क्लास लेवल वेरिएबल ताको कहा जाए राइट क्लास लेवल प्रॉपर्टी क्लास लेवल वेरिएबल ताको कहा जाए क्लास लेवल वेरिएबल आ जहाँ किछि वेरिएबल हम क्लास लेवल रे क्रिएट करछन विथ स्टैटिक कीवर्ड ओके स्टैटिक कीवर्ड रे जदि किसी भी वेरिएबल हम क्रिएट करछन ताको कहा जाए स्टैटिक वेरिएबल अब दिस इज द मेथड राइट मेथड जदि कोनोसी स्टैटिक कीवर्ड क्रिएट कराय तो ताको कहा जाए स्टैटिक मेथड तो जो थरे तुमको स्टैटिक देखा जिवो ताको कहा जाए स्टैटिक मेथड किबा स्टैटिक वेरिएबल तो कत प्रकार जानले क्लास लेवल वेरिएबल static variable now one more variable we have that is called local variable का कहा जाए जेते वाले वेरिएबल क्रिएट करा जाए इनसाइड ए मेथड आपको कहा जाए मेथड ओके सब बल कोच राइट मेन मेथड तो जेकोनोसी मेथड xyz मेथड भीतर जदि आमे वेरिएबल क्रिएट करबा देन ताको कहा जाए लोकल वेरिएबल्स मेथड भीतर जेकोनोसी वेरिएबल क्रिएट करबा ताको कहा जाए लोकल वेरिएबल व्हाई इट इज लोकल बिकॉज एबे आसला स्कोप बिकॉज ए वेरिएबल जेतेबेले मु लोकल वेरिएबल क्रिएट करूची तार स्कोप होची इनसाइड दैट पर्टिकुलर मेथड ओनली outside that method we can't access okay I'll show you outside of that particular method we can't access केमिति मु शो करबी राइट नाउ आमे देखिले लोकल वेरिएबल राइट लोकल वेरिएबल रे सब जिंस देखिले so let me try to access this as outside of this main method एबे फोकस करनी कि मु फोकस करनी मु कौन क्रिएट करछि राइट ए मेथड पर फोकस करनी बट मु जा तुम बुझिया चेष्टा करछि राइट ट्राइंग टू एक्सेस मेन मेथड लोकल वेरिएबल
system.out.println राइट मु कौन एक्सेस करवा चाहूँगी एज कौन आसला एरर आसला रेड कलर वन एरर माउस ओवर कर कौन देखला कैन नॉट रिजल्व सिंबल एज माने से एज कौन खोजी पाई पारनी बिकॉज एज रो स्कोप कि एज वेरिएबल रो स्कोप होची इनसाइड मेथड मेन मेथड इनसाइड मेन मेथड बिकॉज मेन मेथड भीतर मु से वेरिएबल क्रिएट करची दैट इज वेयर तार स्कोप होची मेन मेथड भीतर ही मु m1 मेथड भीतर एक्सेस करि परिबी नाही एबे भूली जाओ आको फोकस करती बट यू जस्ट फोकस ऑन दिस लाइन ओके ट्राइंग टू एक्सेस मेन मेथड्स लोकल वेरिएबल एक्सेस करछि बट मत मिलुनी बट मु जति चाहिबी आ गोटे इंट एज 10 जदि मु क्रिएट कले देखो एई मेथड भीतर मु जदि एज क्रिएट कले राइट आउ गोटे वेरिएबल सेम वेरिएबल बट टू डिफरेंट मेथड रे देखो लेट मी क्रिएट बाइट राइट तो मे बी कंफ्यूज हो जिबा थोड़े राइट बाइट एज इक्वल टू 10 और लेट मी गिव 20 सो दैट तुम कंफ्यूज होबनी बाइट एज इक्वल टू 20 सेम वेरिएबल राइट एटी भी सेम वेरिएबल एटी भी सेम वेरिएबल बट टू डिफरेंट मेथड रे आई कैन क्रिएट तो एबे कौन जानले कि गोटे वेरिएबल जदि अलग किसी मेथड क्रिएट होती आउ अनदर मेथड आम एक्सेस करें तो लोकल वेरिएबल रो स्कोप होची इनसाइड दैट मेथड ओनली एबे बुझिल जहाँ भी वेरिएबल आम क्रिएट करचंती तार स्कोप इनसाइड दिस मेथड ओनली मूव आउटसाइड तो एक्सेस कर परिबिनी आको टिके मु ओके आम जहाँ और प्रैक्टिस करते ता देखुच तो ये जिते वेरिएबल अच्छी राइट मु यही पर्टिकुलर मेथड ये मेन मेथड भीतर ही एक्सेस कर पारिबी नाउ एबे कौन करबा तुम कॉपी करो राइट ये एंटायर स्टेटमेंट को ओके फर्स्ट ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कॉपी करो नाउ यू गो हियर ओके कोतरे जीवो क्लास लेवल वेरिएबल जाओ पेस्ट करो ओके पेस्ट कला पर कौन करबो यही वेरिएबल को जेकोसी मेथड भीतर तुम एक्सेस कर पारिबो तो चलो क्लास लेवल वेरिएबल क्रिएट कले किसी कंफ्यूज होनी मुझे कमेंट कर दूची ओके कमेंट कर दूची आपको कॉपी करो कमेंट करो ओके जहाँ भी मेन मेथड भीतर थिले ता कमेंट करो बट कॉपी पेस्ट करो क्लास लेवल रे तो आगु जेहेतु थिला ये मेन मेथड भीतर ता कह जाए लोकल वेरिएबल नाउ सबू जितने भी वेरिएबल हम क्रिएट करथिले ताको मु प्लेस कर देले क्लास लेवल रे तो ये जितनी भी वेरिएबल रहिला मु जेकोसी मेथड रे मु आको एक्सेस कर पारिबी तुमको प्रूव कर देखौछि ना ये स्टेटमेंट को रिमूव करा मु पेस्ट कर देली कौन जहाँ भी मो मेन मेथड रे थिला system.out.println मेथड जहाँ प्रिंट करिया पई राइट ता मु एक्सेस कर पारछि इट किछि भी एरर आसुनी करेक्ट जेत्ती की भी मु वेरिएबल क्रिएट करछि सब वेरिएबल एक्सेस कर पारछि एटी भी एक्सेस कर पारबी मेन मेथड रे भी एक्सेस कर पारबी बट मेन मेथड रे एरर आसीबो व्हाई आमे परे बुझिबा कोन पा एरर आसीबो ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक रे जाउछि स्टैटिक नॉन स्टैटिक कोन आगो बुझिबा ए फोकस करती मु जदि आ गोटे मेथड भी क्रिएट करबी m2 मेथड ओके जदरे तुमको बुझिया को इजी हबो कंफ्यूज होनी दी थर तीन थर देखो बट कंफ्यूज होनी m2 मेथड क्रिएट कर दे देखो केतरा रिमूव भी कर दिए ओके m2 मेथड क्रिएट कर दे सेम m2 मेथड रे भी मु एक्सेस करि पारछि
variable because that is placed in the class level रे जदि मु प्लेस करछि जे कोनोसी मेथड रे मु एक्सेस कर परबी बट मेथड लेवल रे जदि किछि मु वेरिएबल क्रिएट कर लेट्स से int एज तो क्रिएट करयानी आ किछि क्रिएट करबा int number ओके नंबर 1 मु int नंबर 1 को m1 रे क्रिएट कर दे राइट दिस इज लोकल वेरिएबल ओके जहाँ भी मेथड भीतर हम क्रिएट कले ताको कह लोकल वेरिएबल तो लोकल वेरिएबल को मु एक्सेस करबी m1 रो लोकल वेरिएबल को मु एक्सेस करबी m2 रे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए भीतर एक्सेस करबी कोन नंबर कॉपी करो वेरिएबल देन यू पेस्ट इट आसला कि एरर आसला काहे बिकॉज मोर वेरिएबल अछि m1 रे तो मु m1 रे एक्सेस कर परबी m2 रे मु एक्सेस कर परबी नाही तो सेत पे एरर आसला तुम जब माउस ओवर करबो कोन आसीबो कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल नंबर तो तामान कोन बुझिलो जे कोनोसी वेरिएबल मु क्रिएट करली गोटे मेथड भीतर तार स्कोप होची सेही मेथड भीतर मेथड बाहर तार स्कोप नाही ताको आ जाय लोकल वेरिएबल आ जो वेरिएबल हमें क्रिएट करले जो वेरिएबल हम क्रिएट करले क्लास लेवल रे दैट कैन बी एक्सेस थ्रू आउट द क्लास एंटायर क्लास भीतर जे कोनोसी कॉर्नर ऑफ क्लास हमें एक्सेस कर परबा नाउ हमें बे लोकल बुझिले क्लास लेवल बुझिले नाउ लेट्स कम टू स्टैटिक वेरिएबल कोन मटी आ गोटे क्रिएट कर दी नंबर 1 ओके और 100 नंबर 100 गोटे वेरिएबल रो डेटा मु स्टोर कली ओके स्टैटिक सॉरी दिस इज int 100 तो मोर स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कले तो स्टैटिक आओ विदाउट स्टैटिक वेरिएबल को आ जाए नॉन स्टैटिक क्लास लेवल वेरिएबल्स आको आ जाए नॉन स्टैटिक ओके एबे खाली मन रख आगो पढ़ा एंटायर वीडियो आई विल मेक इट ऑन नॉन स्टैटिक आउ गोटे वीडियो वो स्टैटिक बिकॉज आमको ईच एंड एवरी डिटेल्स बुझार अच्छे ओके एबे खाली फोकस करो कि क्लास लेवल स्टैटिक वेरिएबल राइट आको आ जाए नॉन स्टैटिक वेरिएबल ओके नॉन स्टैटिक वेरिएबल कौन तार एग्जीक्यूशन फ्लो राइट डिफॉल्ट वैल्यू ईच एंड एवरीथिंग हमें डिस्कस करबा तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए दुटा भीतर गोटे ही डिफरेंस कि जिते आम वेरिएबल डिक्लेयर कर नॉन स्टैटिक रे स्टैटिक कीवर्ड देखिपर नथिबो बट स्टैटिक वेरिएबल रे स्टैटिक कीवर्ड थिबो तो ता ही डिफरेंस जिते गोटे वेरिएबल डिक्लेयर करा जाउची यदि स्टैटिक वेरिएबल अच्छी स्टैटिक वेरिएबल कह जाए मान स्टैटिक कीवर्ड अच्छी ताको स्टैटिक वेरिएबल कह जाए आ जो स्टैटिक कीवर्ड नहीं ताको नॉन स्टैटिक कह जाए जो कि स्टैटिक कीवर्ड नहीं तो यहाँ ही डिफरेंस आउ गो डिफरेंस रोची द वे वी एक्सेस द वेरिएबल तो तुम गोटे एग्जांपल कही राइट हियर देख मुझे भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल मु क्रिएट करची राइट सबुथिरे एरर आछी करेक्ट एक्सेस करची एरर आछी बट गोटे स्टैटिक वेरिएबल मु क्रिएट करची गोटे स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करची मुझे नंबर को एक्सेस करबी क्लास लेवल रे ही अछि ओके नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी क्लास लेवल रे अछि क्लास लेवल वेरिएबल किंतु दिस इज नॉन स्टैटिक आउ ए स्टैटिक वेरिएबल भी क्लास लेवल रे अछि ओके क्लास लेवल वेरिएबल अछि देन ए स्टैटिक वेरिएबल टाको मु एक्सेस करबी एठी देखियो एरर आसीबनी रीजन भी तुम कहबी कोन पा एरर आसनी आसला एरर आसनी तो माइंड रे भी क्वेश्चन आसिया दरकार कि भाई कौन पाई दीटा वेरिएबल तो सेम जगह रे क्रिएट कराई खाली गोटे ही डिफरेंस स्टैटिक वेरिएबल ही एरर थ्रो करूनी अदरवाइज जति नॉन स्टैटिक वेरिएबल अच्छी क्लास लेवल रे सब एरर थ्रो करुच्ची वाई बिकॉज तो मेथड भी देखिबो राइट मेथड भी स्टैटिक अच्छी
तो स्टैटिक मेथड भितर नॉन स्टैटिक वेरिएबल तुम डायरेक्टली केवे एक्सेस कर परिबो नाही ओके केमती एक्सेस कर परिबो बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन कौन केमती करा जाए ताई वीडियो डिस्कस करवानी हम बहुत कन्फ्यूज हो बिकॉज मल्टीपल थिंग्स हम डिस्कस कर तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन केमती एक्सेस करवा ता आम डिस्कस करवानी ये आम ये जाना कि स्टैटिक मेथड भितर नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस कर परिबा नाही डायरेक्टली ता हमको प्रूव भी करदेली दीज ऑल आर नॉन स्टैटिक वेरिएबल राइट non-static variable can be accessed by creating an object of the class student details ये वाला किसी object create कर परवा but दरकार नहीं right non-static variable can be accessed by creating an object of the class जो class रो variable अच्छी से class रो object create करें पड़ेगा but जब हम directly access करवा age year by the variable name तो हमें error आसपा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्सेस कर पारबा बट स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड द स्टैटिक मेथड वी कैन डायरेक्टली एक्सेस ओके दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन लाइक हाउ यू एक्सेस वेरिएबल difference between non-static and static okay but these are a huge topic like static and non-static execution flow each and everything these are a huge topic तो ह्यूज टॉपिक डिस्कस करने एथिरे आम मिक्स करवानी एथिरे आम खाली जाना वेरिएबल आम डेटा टाइप्स आउ तार रूल्स जानले कौन कौन सब शिखिले लोकल वेरिएबल स्कोप कौन राइट देन आम जानले क्लास लेवल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल ओके क्लास लेवल वेरिएबल दुईटा जगह आसे स्टैटिक आसे नॉन स्टैटिक आसे तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल ताको कहा जाए जिते आम वेरिएबल डिफाइन करछंती without static keyword ताको कहा जाए नॉन स्टैटिक whenever we are creating variable with static word ताको कहा जाए static variable तो this is also one of the important interview question तो तुम पचारती कि static variable केमिति क्रिएट करा जाए नॉन स्टैटिक वेरिएबल केमिति क्रिएट करा जाए जो स्टैटिक वेरिएबल मोर अच्छी मो स्टैटिक मेथड भीतर मु एक्सेस कर पारिबी कि यस वी कैन एक्सेस एटा स्टैटिक वेरिएबल मु स्टैटिक वेरिएबल भीतर एक्सेस करछि but they will not ask this easy question interviewer will ask can I access non-static variable inside static method the answer is no जेतबे तुम नो कहब रीजन से पचारे कि कौन पाए रीजन होची आम डायरेक्टली एक्सेस कर पारेनी विथ ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पारबा तो ऑब्जेक्ट एक्सेस करबा पाई राइट ऑब्जेक्ट क्रिएट करिया पड़ो आई मीन ऑब्जेक्ट सहित एक्सेस करने ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्रिएट करा पड़ो को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर जो क्लास रो वेरिएबल अच्छी तो आम यही सब वेरिएबल को क्लास रो स्टूडेंट डिटेल क्लास रो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर तो इन डिटेल बुझा आम आउ गोटे वीडियो तो ये फोकस कर आम डिफरेंट टाइप रो वेरिएबल एंड स्कोप होपफुली तुम बुझीपार ए नेक्स्ट आम जाना कौन आम जाना रूल्स जाने पूर्व चलो आम डॉक्यूमेंट को जीवा ओके वी क्रिएटेड दिस एंटायर प्रोग्राम सब जी वेरिएबल अच्छी राइट लोकल वेरिएबल आम शिखिले लोकल वेरिएबल कौन डिक्लेयर इनसाइड ए मेथड राइट देख स्कोप कौन स्कोप अच्छी ओनली इनसाइड दैट मेथड एक्सेस कर पार मस्ट बी इनिशियलाइज मान कौन इक्वल टू पर जहाँ भी डेटा देछ ताको कहा जाए इनिशियलाइजेशन गोटे वेरिएबल रो इनिशियलाइजेशन ओके जिते मेथड एग्जीक्यूशन सरला तार वेरिएबल रो स्कोप भी सरला लाइफ भी सेठी सरला आ गोटे वेरिएबल तुम एक्सेस कर पारबनी दैट इज वेयर से एक्सेस होउनी बिकॉज गोटे वेरिएबल जो एग्जीक्यूशन सरी जाउची तार स्कोप भी सरला तार लाइफ सरला तो आ गोटे वेरिएबल आम एक्सेस कर पारबनी सेथि पई instance variable is nothing but non-static okay non-static variable okay जाके क्लास लेवल रे डिक्लेयर करा जाता है ओके स्कोप होची एंटायर ऑब्जेक्ट या एंटायर क्लास नीड ऑब्जेक्ट टू एक्सेस जेमती कहितले ऑब्जेक्ट क्रिएट करा दरकार जोतिर कि तुम एक्सेस कर पारबो स्टैटिक वेरिएबल कोन डिक्लेयर यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड ओके स्टैटिक कीवर्ड
क्लास आम स्टूडेंट डिटेल क्रिएट कले राइट डिटेल क्रिएट कले ता भीतर स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम we created something different variable name right but there कौन main जिनसे तुम focus करे दरकार के static keyword तो shared across all the objects access using class name तुम जदि जे कौन सी class अरे तुम outside class access करे चाहो कि inside class access करे चाहो तो तुम directly access करे परिबो either नहले तुम class ना सहित भी access कर परिबो आउ with object entire object तुम access कर परिबो क्विक रिविजन कौन लोकल वेरिएबल रिपीट एथि मु करूची तमे भी बोर हो जातो बट रिपीट एथि करूची जोतिर कि तुम सुनिकी भी मन रहबो ओके लोकल वेरिएबल इनसाइड मेथड ओनली इंस्टेंस इनसाइड क्लास एंटायर ऑब्जेक्ट लेवल किबा क्लास लेवल स्कोप रहबो स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड क्लास रहबो आ क्लास लेवल रहबो ओके स्टैटिक वेरिएबल नाउ लेट्स फोकस ऑन द रूल्स राइट बेसिक रूल्स कौन जेतबे आम वेरिएबल क्रिएट कर इट कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और आई मीन इट कैन स्टार्ट विथ लेटर देन स्पेशल कैरेक्टर आसबो अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल स्पेशल कैरेक्टर रे ओनली अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल ही आम यूज कर परबा टू क्रिएट वेरिएबल ओके मीन्स इट कैन स्टार्ट विथ दीज 3 लेटर ओनली ओके एंड कैनॉट स्टार्ट विथ नंबर हम डायरेक्टली नंबर सहित स्टार्ट कर पारिबानी ओके आम देखा प्रैक्टिकली भी देखा चलो आपको बर्तमान पाई कमेंट कर देथिबा राइट हम कौन देखा इंट 1 नंबर इक्वल टू 100 है कि एरर आसला कौन एरर आसला कैनॉट रिजल्ट सिंबल नंबर क्रिएट ए लोकल वेरिएबल ओके आसवानी क्रिएट कर ओके नंबर के भी स्टार्ट हो पारे गोटे वेरिएबल ने बट वी कैन क्रिएट विथ स्पेशल कैरेक्टर लाइक अंडरस्कोर और डॉलर ओके हम क्रिएट कर पारे बट जति भी आमर अदर स्पेशल कैरेक्टर अच्छी आम जो यूज करवा एरर आसो कैनॉट अप्लाई टू इंट देख एरर आसला नंबर रे भी कौन से नंबर रे भी स्टार्ट हो पारिबो नहीं प्रैक्टिकल देखिले ओके कैनॉट यूज जावा कीवर्ड्स कौन लेट्स अंडरस्टैंड कीवर्ड्स माने तुम जहाँ भी देखो चाहे प्रोग्राम रे राइट व्हिच इज कम्स विथ जावा पब्लिक हो गला क्लास हो गला ओके वॉइड हो गला स्टैटिक हो गला करेक्ट स्टैटिक हो गला यही सब तुम ना वेरिएबल रे यूज कर पारिबनी चलो ता भी देखा इंट स्टैटिक कौन आसला एरर आसला कौन एरर आसला नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज आम इनबिल्ड कीवर्ड आम यूज कर जावार कीवर्ड जोटा रिजर्व होगी अच्छी खाली जावा ताको आम यूजर डिफाइंड वेरिएबल रे यूज करने चेष्टा कर आम यूज कर पारिबानी जो कि एरर आसछि कह कैनॉट यूज जावा कीवर्ड्स जावा सहित जी भी कीवर्ड आसछि वर्ड्स आसछि राइट दैट इज रिजर्व ओनली फॉर जावा आम आम प्रोग्राम यूज कर पारिबानी जी भी यूज कर तार रूल्स रेगुलेशन अच्छी से जगह ही आम यूज कर पारिबा ओके बट ताको आम आम प्रोग्राम रे गोटे यूजर डिफाइंड वेरिएबल क्रिएट करियारे आम यूज कर पारिबा नाही केस सेंसिटिव एथिपे स्टैटिक variable okay I'll create one more देख लो धीरे जागा डिफरेंस बिकॉज ऑफ केस सेंसिटिव ये वी होची कैपिटल ये होची स्मॉल ओके तो केस सेंसिटिव मान दीटा केवे समान नुह राइट ना सेम अच्छी बट केस आर डिफरेंट सेम नुह से दिस इज केस सेंसिटिव ओके बेसिक रूल जान लो 4टा रूल जान लो देन एग्जांपल कौन कौन सब तो गुड एग्जांपल कौन बैड एग्जांपल कौन गुड एग्जांपल होची तुम जदि अवॉइड कल माने रूल्स मानिलनी क्रिएट कल वेरिएबल दैट इज बैड एग्जांपल राइट गुड एग्जांपल कौन मीनिंगफुल ना दबो राइट दैट शुड बी यूनिक नेम
ओके आउ जदि दुईटा वर्ड तो मिक्स कर गोटे वेरिएबल क्रिएट कर दैट शुड बी इन कैमल केस ओके आ कहुए कैमल केस फर्स्ट लेटर तो तुम सब लोअर केस एंड देन सेकेंड वर्ड जहाँ भी तुमको आड हो जगह फर्स्ट लेटर रपर केस तो ताको कहुए कैमल केस ओके ना बेस्ट प्रैक्टिस कौन ऑलवेज यूज कैमल केस whenever we are combining two different words right in a variable creation से जगह आम कैमल केस यूज करवा अकाउंट बैलेंस गला स्टूडेंट एज गला राइट ताको कहुए कैमल केस आउ नेमिंग कन्वेंशन एमती रहा दरकार गोटे वेरिएबल जो आमर थियोरी वीडियो भी कही कि दैट शुड बी मीनिंगफुल जदि जन देखला एज कि स्टूडेंट एज तो जना पड़ जे एथिरे डेटा एज एज ही स्टोर राइट जदि नेम मु वेरिएबल ना देवी कि स्टूडेंट नेम तो मुझे जानवी कि ओके दिस इज होल्डिंग स्टूडेंट नेम तो सेमती मीनिंगफुल ना रहा तो जमीक ये रहा राइट अकाउंट बैलेंस तो मुझे जानवी कि जहाँ भी वैल्यू रहा दैट इज नथिंग बट अकाउंट बैलेंस ओके रूल्स फॉर क्लास नेम क्लास ना जिते दौरान तार भी रूल्स अच्छे ओके स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर मुझे जमी कहली कैपिटल लेटर स्टार्ट हम राइट यूज पास्कल केस आगे कहुए जोटा कैपिटल लेटर स्टार्ट हम आ दुईटा वर्ड जो जॉइंट हो राइट तार फर्स्ट लेटर अगेन इट विल बी अपर केस ताको पास्कल केस कीप इट मीनिंगफुल जमीक वेरिएबल रे भी आम फॉलो कर मीनिंगफुल रहा दरकार तो मुझे स्टूडेंट डिटेल्स स्टोर कर तो मोर क्लास नेम ऑब्वियसली स्टूडेंट डिटेल्स रहा दरकार कि स्टूडेंट्स रहा दरकार ओके गुड एग्जांपल जमी स्टूडेंट डिटेल्स एम्प्लॉय डेटा कि एम्प्लॉय डिटेल्स बैंक अकाउंट्स राइट एगुड़ा किसी एग्जांपल रहा दरकार आमर क्लास नेम कई नोट्स मुझे तुमको डिस्क्रिप्शन दे देवी आउ थे तुम रेफर कर बैड एग्जांपल कौन स्टूडेंट एबीसी माय क्लास एग्जांपल ये सब हूँ बैड एग्जांपल ओके ऑफ ए क्लास नेम जो तुम किए भी जापर डेमो टेस्ट मुझे जानवी मु स्टूडेंट डेटा स्टोर कर गोटे डमी क्लास क्रिएट कर राइट बेस्ड ऑन डेटा मु स्टोर कर मदर क्लास नेम भी रहा दरकार तो आज आम कंप्लीट प्रैक्टिकल भी कले शिखिले आ गोटे जिनस बाकी रही जाइए राइट मुझे तुमको डिफॉल्ट वैल्यू देखेबार अच्छे ओके लेट्स सी डिफॉल्ट वैल्यू वी हैव सीन एवरीथिंग क्लास लेवल वेरिएबल रही आम जदि एसाइन करवानी डेटा तार डिफॉल्ट वैल्यू आम शो कर ओके डिफॉल्ट वैल्यू एक्चुअल एसाइन हो ऑटोमेटिकली एवं जब एक्सेस करवा ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप रो डिफॉल्ट वैल्यू हमको शो कर प्रीवियसली कौन शो करथिला आमको शो करथिला ए डेटा करेक्ट तो ये आर डिफॉल्ट वैल्यू सब शो कर लेट मी अनकमेंट दिस ओके मु तुम गोटे काम कर दिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए आम फोकस करनी कि व्हाट इज दिस कौन पाई लिखिदी डिफॉल्ट वैल्यू क्रिएट जानापी ऑब्जेक्ट क्रिएट करा पड़ो तुम ये खाली फोकस कर कि डिफॉल्ट वैल्यू ओके चलो आम जाना डिफॉल्ट वैल्यू ओके लेट मी रन देखिल डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 0 0 चार्टा जीरो कार आसला चार्टा जीरो आसला आमर एज ईयर स्टूडेंट फोन नंबर काली पढ़ते मीन्स प्रीवियस वीडियो पढ़ते राइट देन 0.0 0.0 फ्लोट रो गोटे डबल रो गोटे आसला देन दिस इज फॉर कैरेक्टर जोटा स्लैश यू 0000 थिला राइट दैट इज फॉर कैरेक्टर ओके कार देन बुलियन एनीवे इट्स फॉल्स तो सब जिन जहाँ भी आम डिस्कस करते मुझे प्रैक्टिकली आज तुमको A to Z बुझेली होपफुली तुम मन रही भी मन रोनी नोट्स रेफर कर एंड प्रैक्टिकल कर वीडियो को पॉज करके तो आम कौन शिखिले ये वीडियो शिखिले कि प्रैक्टिकली
ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆମର ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ, ଅଲ୍ ଦ ସ୍କୋପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଏବଲ୍, ରାଇଟ୍, କ'ଣ ସବୁ ଲେଭେଲ୍ ଅଛି ଭେରିଏବଲ୍ର, ତାର ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ ତା ଆମେ ଶିଖିଲେ। ଥାର୍ଡ, ଆମେ ଏହା ବି ଶିଖିଲେ କି ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଭେରିଏବଲ୍ ନେମ୍ସ, କ'ଣ କ'ଣ ରୁଲ୍ ଅଛି। ଆଡ଼ିସନାଲି ଆମେ ଶିଖିଲେ କ୍ଲାସ୍ ନା, ରାଇଟ୍, କ୍ଲାସ୍ ନା ବି କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ ତାର ରୁଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଆମେ ଯାହା ବି ଆଜି ଶିଖିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ତୁମେ ଶିଖିବ। 2 ଥର ଦେଖ, 3 ଥର ଦେଖ, 4 ଥର ଦେଖ, ଯେତେ ପାରୁଛ ଦେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଦେନ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବ, 2-3 ଥର ନ ଦେଖିକି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ ତୁମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ରେ ତୁମେ ଫୁଲ୍ଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ବିକଜ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବ, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ବି ସଜେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେୟାର କର ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଭା, ତା ବି ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲସ୍ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ। ତ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।